Hello everyone, welcome back to EduSite. This is a continuation video that is part 2 of session 2 of vocabulary by EduSite. In part 1 video, we started our discussion on learning various types of liars. So without any further delay, let us start part 2 of session 2. Our first type of liar is chronic liar. See its meaning. While normal people would lie for a reason or on a particular occasion, chronic liar lies continuously over and over again. इसका मतलब देखो कि कुछ लोग जैसे झूठ बोल देते हैं सपोज किसी सिचुएशन से बचने के लिए, ओके, लेकिन जो क्रॉनिक लायर होता है वो हर टाइम झूठ बोलता है और बार बार झूठ बोलता है. मैं मेंशन कर देती हूँ, हर टाइम झूठ बोलता है. ओके, क्रॉनिक लायर हर टाइम झूठ बोलता है. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही है कि मैंने पहले भी बताया था, लायर्स के साथ हम जो वर्ड्स एज एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं हम उनका मीनिंग जान रहे हैं, राइट, लायर्स के साथ यूज करके. ओके, सो यहां पर हम क्रॉनिक का मीनिंग देखेंगे. ओके, इट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड क्रोनोस विच मीन्स टाइम. जैसे मैंने क्रॉनिक लायर के केस में बताया था जो हर टाइम झूठ बोलता है. तो अब क्रॉनिक का जनरल मीनिंग क्या होगा? व्हाट डज क्रॉनिक मीन? इट मीन्स समथिंग दैट हैपन्स again and again. ऐसा कुछ भी जो बार बार हो. ओके, और क्रॉनिक लायर के केस में जैसे हमने देखा था कि ऐसा लायर, ऐसा झूठा व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस रूट वर्ड क्रोनोस. ओके, chronological, it means in correct time and order. मतलब करेक्ट टाइम और ऑर्डर में होना, मतलब जो चीज पहले हुई है वो पहले हो, जो बाद में हुई है वो बाद में. ओके, जैसे हिस्ट्री हो गई, हम हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं. जो पहले इवेंट हुआ है वो पहले पढ़ेंगे, जो बाद में हैपन हुआ है वो हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, आई एम मेंशनिंग हियर क्रोनोलॉजिकल स्टोरी. यू कैन टेक इन प्लेस ऑफ हिस्ट्री. Chronological story will mean that it is told with the ordered time sequence. It is an example here. मतलब अगर आप एक स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सुना रहा है या आप पढ़ रहे हैं तो मतलब जो पहले हुआ है वो आप पहले पढ़ेंगे, जो बाद में उस स्टोरी में हैपन हुआ है वो आप बाद में पढ़ेंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड क्रोनोलॉजी. पहले मीनिंग देख लेते हैं. द साइंस ऑफ टाइम, ऑर्डर and the accurate dating of events. As you can see, this word contains logy, and logy means study. Okay, so chronology relates to the study. It is a science, it is a study of time, order and accurate dating of events. मतलब जो इवेंट पहले हुआ है या उसके बाद क्या हुआ है या उसके बाद क्या हैपन हुआ है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. ओके,
Next word is chronometer. Chronometer is an equipment used to measure time, or you can say it is an accurate clock. ओके ऐसा इक्विपमेंट जो टाइम को एकदम करेक्ट दिखाए. ये इक्विपमेंट शिप्स में यूज होता है. ओके यूज्ड ऑन शिप्स, राइट. Let us discuss the next word, anachronism. See here, our root word is chronos. You can see here, chronism is here, right? Which belongs to the root word. Chronos means time. So anachronism also belongs to time. What does it mean? Someone or something which is out of time or out of date or belonging to a different era. कोई पर्सन या कोई चीज समथिंग जो एक डिफरेंट एरा से बिलोंग करती है, मतलब वो गलत टाइम में है. ओके जैसे सपोज करो आप जुरासिक पार्क मूवी देख रहे हो एंड वन ऑफ द डायनासोर्स इज वेयरिंग रिस्ट वॉच, जो कि आज के टाइम की है रिस्ट वॉच. ओके तो अब डायनासोर के पास रिस्ट वॉच तो नहीं हो सकती ना, तो दैट रिस्ट वॉच वुड बी एनाक्रोनिज्म. ओके it is something that is out of time. Okay, now we will discuss a word, incongruous. Incongruous. Okay, जैसे anachronism is telling about something or someone out of time. Incongruous is someone or something which is out of place. मतलब इसमें हम टाइम के बारे में बात कर रहे थे या डिफरेंट एक एरा के बारे में बात कर रहे थे. इनकॉन्ग्रुअस में हम प्लेस के बारे में बात करेंगे, मतलब जो गलत जगह पर हो. ओके जैसे सपोज करो दिल्ली सिटी में आप पेंगुइन्स देखते हो, दैट वुड बी इनकॉन्ग्रुअस. दिल्ली में पेंगुइन्स नहीं हो सकते, वो कोल्ड वेदर में हो सकते हैं, अंटार्कटिका में. ओके यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय स्प्लिटिंग इट. इन प्लस कॉन्ग्रुअस. ओके जैसे आपने मैथ्स में कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पढ़े होंगे. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, मतलब सेम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं एंड डायमेंशंस भी सेम होती हैं corresponding. Okay so and in here is used in the negative sense. ओके जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. तो इनकॉन्ग्रुअस हो गया जो मतलब अलग स्पेस ऑक्यूपाई करें, जो आउट ऑफ प्लेस हो. ओके now let us discuss the last word related to the root word chronos, which is synchronize. It is a very commonly used word. What does it mean? To make something happen or work on the same date, time and speed. मतलब ऐसा कुछ जो सेम टाइम पर और सेम स्पीड से हो, सेम ड्यूरेशन में हो. जैसे आप डांसर्स का एग्जांपल ले सकते हैं. डांसर्स मेक देयर मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू द बीट्स. ओके दे आर कोऑर्डिनेटिंग their movements in the same time with the same speed and in the same duration. So we say that their movement is synchronized. Okay now moving on to the next type of liar, pathological liar. So first of all we will discuss its meaning. Lying is a disease for such people that no antibody can cure. मतलब पैथोलॉजिकल लायर्स के लिए झूठ बोलना एक बीमारी होती है जिसे कोई मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती. दिस पैथोलॉजिकल वर्ड हियर इज यूज्ड इन द फिगरेटिव सेंस. ओके जैसे हमने कॉन्जेनाइटल लायर के केस में पढ़ा था कि जो जन्म से ही झूठा होता है दैट इज कॉन्जेनाइटल लायर. सो इन द सेम वे हियर पैथोलॉजिकल लायर इज देयर. तो ऑब्वियसली झूठ बोलना बीमारी नहीं होती है मेडिकली. ओके
Now see the root word of the word pathological. The root word is pathos, which means feeling. अब आप कहेंगे कि पैथोलॉजिकल वर्ड फीलिंग से कैसे रिलेटेड है, पैथोस से, रूट वर्ड से. देखो, here I discussed in pathological liar that it is a disease or sickness. Like जब आप किसी को कहते हो ना आप बीमार हो, and what do you commonly say? You say that you're not feeling well. Okay, so sickness is related to the word pathos here. In the same way, in pathological liar, the liar is diseased or sick in the habit of lying. Okay, so we have discussed about pathological liar here. Now we will discuss the meaning of pathological in general, which comes from the root word pathos, which means feeling. Pathological here is an adjective. It is something that is caused by a feeling of illness or disease, or when you feel sick or unwell about something. Okay, जैसे हमने कॉन्जेनाइटल लायर के केस में पढ़ा था कि ऐसा झूठा जो जन्म से ही झूठा है. Of course, that is used in the figurative sense. Okay. In the same way here, pathological is generally used in the figurative sense. जैसे pathological liar, कि इतना झूठ बोलता है, ये हम कहेंगे कि झूठ बोलना उसके लिए बीमारी बन गई है. Okay. You can take another example. As we discussed about congenital fear of dark, in the same way we can take the example pathological fear of dark. It means the fear of dark is so deep rooted in someone that it appears to be a disease for the person. Okay, so that means pathological fear of dark. Now move on to the next word, sympathy, related to the root word pathos. Okay, when you feel or suffer with someone, you feel sympathy. We will understand it by splitting the word. Sim plus pathy. As you know that pathy means feeling, related to the root word. Okay, and here sim means together. Okay, means आप साथ में feel कर रहे हो. How? When someone is feeling happy, then you feel happy. When someone is feeling sad, then you also feel sad. Okay, when you feel or suffer with someone, okay, then you feel sympathy. Now let us discuss the next word, antipathy. When you feel against someone, you feel antipathy. See, I will also split this word, anti plus pathy. Pathy, you know that it relates to feeling. Okay, and anti means against. Okay, जैसे आपने words भी सुने होंगे, words like antiseptic or antibody. Okay, so these words are used against something. Okay, in similar way, antipathy is the word which is used against someone. Okay, when you feel against someone, you feel antipathy. Okay, sympathy and antipathy are opposite to each other. They are antonyms. Okay, moving on to the next word, apathy. Apathy means when you have no feeling at all. See, we have discussed sympathy, when you feel or suffer with someone. In case of antipathy, when you feel against someone. So we are discussing apathy, when you have no feeling. Okay. कोई कितना भी परेशान हो, दुखी हो या खुश हो, you just don't care, you are not bothered, or you do not show any emotions. Okay, just indifferent, lack any emotions, or just don't care. Now the next word is empathy. The ability to understand a person's feeling as if they were yours. मतलब दूसरे के बारे में आप इतना केयर करते हो, इतना समझते हो दूसरे को कि उनकी फीलिंग्स को आप ऐसे समझते हो कि वो आप ही की फीलिंग्स हो. मतलब दूसरा दुखी हो रहा है तो आप समझते हो कि आप ही को दुख हो रहा है.
As we discussed the word sympathy, in which you feel or suffer with someone. But in case of empathy, you care for someone, you understand a person such that you feel in the same way as they are feeling. Okay? By placing yourself in someone's position or place. Empathy is the higher level of sympathy. Now our next word is pathetic. As you know that we are discussing the words related to the root word pathos, which means feeling. Okay, so pathetic is related to feeling. Okay, tell me, who is athletic? Athletic is someone who has the characteristics of athletes. Okay, athletic athletes से related है. So here pathetic भी feeling से related है. Okay, pathos means feeling. But here this word is used in the negative sense. Okay, आप किसी के लिए दया फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो. Okay, so it means causing you to feel pity or sadness. Here the person or someone is causing you to feel pity or sadness. मतलब the person is pathetic. Okay, and you are feeling sad or pity. Moving on to the last word of the root word pathos, telepathy. It means communicating with someone without speech or any other conventional communication method. मतलब बिना बात किए या बिना और कोई कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किए आप किसी की फीलिंग्स जान लो. ये रूट वर्ड पैथोस से आया. पैथोस मीन्स फीलिंग. ओके, एंड हेयर टेली मीन्स कम्युनिकेशन. टेली प्लस पैथी. सो आप कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ, उनकी फीलिंग्स जान लेते हो. ओके, हालांकि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट वी हैव सीन सम फिक्शनल कैरेक्टर्स who can read minds. That is, we can say that they use telepathy. Okay. Now, next type of liar is unconscionable liar. A person who lies without any guilt or with no conscience. जो जिसे मतलब कोई गिल्ट नहीं होती है झूठ बोलते हुए, है ना. या उसके अंदर बता भी कॉन्शियस नहीं मैं बोलती. ठीक है, बिना किसी कॉन्शियस के ये बोलते हैं. जो बिना किसी कॉन्शियस के झूठ बोलता है वो उसे झूठ बोलने में कोई गिल्ट नहीं होती. Now, next type of liar is unconscionable liar. A person who lies without any guilt, with no conscience. मतलब जिसे झूठ बोलते हुए कोई गिल्ट ना हो और वो बिना किसी कॉन्शियंस के झूठ बोलता है. To understand the meaning of unconscionable, first of all, we will discuss the meaning of conscience. Okay, and we will discuss it with the root word. There are two root words. First is sion, which means to know, and the second root word is seen, which means knowing. Okay, as you can see, both the root words are modified form of each other. They almost have the same meaning, to know or knowing. Okay, now we will discuss the word conscience. Conscience means it is your knowledge with a moral sense of right and
wrong. Okay, as you can see here, the root word is seen. Okay, which means knowing. Means this word is related to knowing. जब आप कुछ जानते हो तो मतलब आपको उस चीज की नॉलेज है. ओके, सो इट इज योर नॉलेज विद वट नॉलेज विद अ मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मतलब आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड्स रिलेटेड टू दीज रूट वर्ड्स. ओके, now that we have discussed the meaning of the word conscience, now we will go back and we will study the meanings of unconscionable and unconscionable liar. First of all, look at unconscionable. I will split this word in three parts: un plus conscion plus able. Here, as you can see, word conscion is there, which relates to the word conscience. Conscience means, as we have discussed, the knowledge with a moral sense. So, knowledge with moral sense. Okay, and able is used here, means knowledgeable. So here, conscionable means, conscionable is a person. When a person is doing an activity or saying things with the moral sense, with the knowledge of what is right and wrong. Okay, and un is used here. Un is used here in the opposite sense. Okay, like in the words unhealthy or unsophisticated. Okay, so in negative way में use होगा. So unconscionable, you can say, is the person who is doing the activities or saying things विदाउट द मॉरल सेंस. मतलब जो वो काम कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है उसमें सही गलत नहीं देख रहा है कि क्या है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनकॉन्शनेबल लायर. सो अनकॉन्शनेबल लायर हो गया अ पर्सन हु लाइज विदाउट एनी कॉन्शियंस. मतलब वो सही गलत का ध्यान किए बिना बस झूठ बोल रहा है. Means he doesn't care about the moral implications of his or her activities. Okay, or if somebody gets hurt or somebody loses something or someone. I hope the meanings of the words unconscionable and conscience are clear to you all. Now let us move further and discuss some more words based on the same root words. Okay. So to start, let us take up probably the most elementary word we will discuss in this video series. The word is, as you can see, science. Okay, it is a systemized knowledge. I don't think I need to explain what science is, but you can see here. Here is the root word seen, means knowing. So it is related to knowledge. Okay, it is a systemized knowledge. Okay, science is the knowledge of everyday phenomena that happen around us, presented in a systemized manner. Okay, like how wind blows or how a machine works, etc. Now let us see the word conscious. Okay, as you can see here, the root word is sion, which means to know. So it is related to knowledge. Conscience here is the knowledge with a moral sense of right and wrong. And this is conscious. Okay, these have different meanings. So see to its meaning. Knowledge or awareness of one's emotions like seeing, hearing or feeling things. मतलब simple way में कि होश में होना. Okay, जैसे unconscious इसका अपोजिट हो गया. कहते हैं ना कि वो अनकॉन्शियस हो गया है, वो होश में नहीं है, लाइक बेहोश हो गया है. ओके, सो कॉन्शियस मीन्स होश में होना. नाउ लेट अस डिस्कस द वर्ड omniscient. I will break this. Omni plus scent. Here scent relates to the root word seen, knowing means. And omni means all. Okay,
मीन्स जो सब कुछ जानता हो. ओके, omniscient is who knows everything. Okay, now move on to the next word, present. Here pre is used. Pre means pehle, before. Okay, and sent here has the root word seen. You know that, knowing. Okay, मतलब जो कुछ होने वाला है वो पहले से ही जान ले, मीन्स फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ले. ओके, द पर्सन who knows about things that have not happened yet. Okay, or you can write who can predict the future happenings. Okay, now nascent. Here ne means no or not. Okay, and sent here has a root word seen. You know that. Okay, मतलब जिसे knowledge नहीं है, जिसे नहीं पता, means lack of knowledge. Who does not know. Okay, वो कुछ भी हो सकता है. और you can take another meaning, ignorant. Let us study the next type of liar, glib liar. Glib liar is someone who is lying in a very smooth and quick manner to hide the insincere motives. Means एक person इतनी smoothly और इतने quick way में झूठ बोलता है कि हमें लगता है कि ये सच बोल रहा है और उसकी insincerity hide कर रहा है वो झूठ बोलते हुए. Okay, here glib is the method of speaking. Okay, method of speaking in a very smooth and quick manner. Okay, you can take example, another example, glib politician. Okay, the politician अपनी speech में इतनी smoothly इतनी speech देते हैं इतने quick way में कि उनकी insincerity hide हो जाती है उस speech की. Now move on to the last type of liar for today, egregious liar. The most vicious of liars, मतलब जो liars बहुत cruel हों, सबसे cruel जो liars होते हैं वो egregious liars होते हैं. His or her lies are so hurtful that you feel disgust upon hearing them. मतलब ऐसे झूठ बोले ऐसा liar कि उसको सुनकर आपको घिन आए. Now let us quickly move to the word root for egregious here. The word root is gregis, which means herd or flock, jhunt. Okay, now let us relate the word egregious to the word root. Okay, as you can see here, gregi is there, which relates to the root word gregis, means jhunt. Okay, so egregious would mean, first of all, see to its meaning, something so vicious or bad that it stands out from the group. ओके, मतलब कोई चीज इतनी बुरी है या इतना क्रूअल है कोई चीज कि वो सबसे अलग दिखे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ से 50 स्टूडेंट्स, you have that one student who is the naughtiest of all of them. Okay, and that student is in the eyes of all the teachers because of his activities, and his activity stands out from the group. Okay, so for egregious, he is a person whose activities are so bad that he or she can easily be differentiated from the group.
or from herd or flock. Okay. Now let us look at some more words related to the same word root, that is gregis. Okay, which means herd or flock, jhund. Our first word is gregarious. Gregarious is a person who enjoys companionship or to be surrounded by people. Okay, मतलब जिसे लोगों के साथ रहना पसंद हो, socialize होना पसंद हो. Okay, you can like who likes to be to socialize. Okay. As you can see here, Greg is used, which is related to the root word gregis, of course. Okay. So moving on to the next word, congregate. So first see to its meaning. When people gather together in a group or herd, मतलब जब लोग इकट्ठा हों एक ग्रुप में किसी इवेंट के लिए या और किसी भी वजह से. As you can see here, con word is used here. Okay, and con means together. Okay, and gregate, of course, related to the root word gregis. Okay, moving on, let us take the final two words of the session, that is segregate and aggregate. Segregate is the opposite of the word congregate. Okay, just like in congregate, people gather in a group. Okay, in segregate, people or things are put apart from the group. मतलब ग्रुप से या हर्ड से अलग हो जाते हैं, people or things. Okay. Now aggregate would mean the whole formed by gathering or combining separate entities of elements. मतलब जब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए सपोज, तो जो लोगों का जो ग्रुप हुआ उस ग्रुप को हम एग्रीगेट बोलेंगे. ओके, फॉर आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके टोटल कर देते हैं एंड यू विल गेट एग्रीगेट मार्क्स. The whole formed is the aggregate, means the group here formed is the aggregate. Okay, as you can see here, all these three words are pertaining to the root word gregis, which means herd or flock, means group से related है तीनों words. Okay, so we have completed session 2 of vocabulary by EduSite. This session, as you all know, consisted of 2 parts in which we discussed a particular set of words. I hope you all liked these sessions and learned something new in an easy way. So I wrap up today's video. In the next video, we will come up with new interesting words for you to learn. Meanwhile, you please share your valuable feedback on our email or in the comment section. The email address is provided in the description box. Please do not forget to subscribe to our channel and like our videos and share it with your friends. We will feel our efforts are being appreciated. So goodbye for now. See you soon in the next video. So stay safe, stay healthy and keep learning.